PN junction diode. It is part of our day-to-day life. हमारे सेल फोन के चार्जर में, लैपटॉप के चार्जर में, कंप्यूटर ऑन करने के लिए या फिर कंप्यूटर चलाने के लिए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके लिए हमें डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज रन ऑन द डीसी वोल्टेज और डीसी करंट. और हमारे पास जो अवेलेबल सप्लाई है, हमारे जो प्लग्स है हमारे हाउसेस में, तो उसमें 230 वोल्ट एसी वोल्टेज होता है. एंड वी नीड टू कन्वर्ट दैट वोल्टेज टू एसी टू डीसी. और ये कौन काम करता है? द मेजर कंपोनेंट इन द डीसी सप्लाई हमारे चार्जर के अंदर, वो है पीएन जंक्शन डायोड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर डायोड. लेट अस अंडरस्टैंड पीएन जंक्शन डायोड इन वन शॉट. तभी ये लेक्चर पूरा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायोड. अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड क्या चीज़ है, क्या होता है जब हम पीएन जंक्शन पी और एन को कनेक्ट करते हैं. एंड फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? डायोड करंट इक्वेशन. इट इज also called Shockley's current equation, ideal current equation. And what is dynamic resistance? How to measure the dynamic resistance? इसको समझने के बाद हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड. रिवर्स बायस में डायोड वर्क क्यों नहीं करता? लीकेज करंट क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है? एंड व्हाट इज मीन बाय एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज? और उसके बाद हम काफ़ी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे. जो भी इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे. सो लिसन द होल लेक्चर केयरफुली and you will get the whole concept of all these things. Let us begin with the unbiased PN junction diode. Now we have studied about the P-type extrinsic semiconductor and N-type extrinsic semiconductor. हमारे पास P-type extrinsic है, N-type extrinsic semiconductor है. हमने सेपरेट डोपिंग किया और हमने उसको ज्वाइन किया, या फिर एक ही मटेरियल में अलग अलग इम्प्योरिटीज को ऐड करके हमने एक साइड में पी टाइप बना दिया, एक साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया. अभी हम ब्रीफ में देखते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके, कि पी टाइप के अंदर होता क्या है. पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी होल्स है, लेकिन माइनॉरिटी भी प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है. और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें माइनॉरिटी भी प्रेजेंट है, वो है होल्स. ये माइनॉरिटी का हमें लगेगा रिवर्स सैचुरेशन करंट को समझने के लिए जब हम रिवर्स बायस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लेट अस फोकस दी majority current carriers in forward in this situation. Now what happens when these two are joined together? There is a junction. So this is the junction here between this P and N. अभी immediately जब हम join करते हैं तो होता क्या है? Let us watch this in a small animation. इस एनिमेशन में आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. ठीक है, या पी साइड से एन साइड में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके. कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, नो एक्सटर्नल बायस. इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी एंड पी टू एन. ओके. होल्स पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन इज व्हाई दे आर मूविंग अक्रॉस द जंक्शन? वो अपनी जगह पे नहीं रह सकते? नहीं. नेचर ट्राइज टू बैलेंस दिस. हमने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया है. मतलब एक तरफ होल्स है जो कि वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि होल्स में ऑक्युपाई करना चाहते हैं. देयरफॉर सो दिस इज द कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली मूव होते हैं. एंड इन दिस प्रोसेस दे कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट. और ये बहुत ही स्मॉल करंट होता है क्योंकि हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है. तो ये जो दे आर ट्राई टू रिकम्बाइन एट द जंक्शन. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बैलेंस हो जाता है नियर द जंक्शन एंड दे गेट ट्रैप्ड, दे बिकम इमोबाइल, है ना. एंड दे लिविंग इमोबाइल ions near the junction on both sides. So this is electrons on p side and holes on n side. तो यहाँ पे ट्रैप हो गए. And this creates a kind of a potential barrier, and this potential barrier is called as a inbuilt potential barrier. अब ये कितना इनबिल्ट पोटेंशियल बैरियर रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग. हमने कितने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड किए पी में और कितने पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड किए एन बनाने के लिए. ठीक है. तो ये जो है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ हाइट
So this is the inbuilt potential barrier. This is also denoted as VBI, and this is given by KT by Q. So this is given by KT divided by Q into natural log of acceptor atoms, donor atoms divided by intrinsic concentration. तो ये चीज डिसाइड करती है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन P का और N का दोनों का. सो K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, Q तो चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो ये चीज पे ये डिपेंड करती है और इसी पे डिसाइड होता है कि कट इन वोल्टेज कितना होगा. ठीक है, कितना वोल्टेज लगेगा इसमें से करंट फ्लो करने के लिए. ठीक है, so this creates the depletion, and this depletion region is called as a space charge region with a built-in potential V naught. ठीक है, so no net current flows. Okay, drift and diffusion. Drift मतलब जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, तब okay they will acquire the velocity and they will drift from one point to other point. मतलब यहाँ से होल्स को यहाँ पे ड्रिफ्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर ड्रिफ्ट करेंगे और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्रिफ्ट करंट, और जो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होता है दैट इज डिफ्यूजन करंट. ओके, सो सो दिस इज द width of depletion region 0.5 micrometer and denoted by W. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू दी क्या होगा अगर हमने वोल्टेज को अप्लाई किया तो. See this. In this diagram, we have applied a voltage plus to the P side semiconductor and negative of DC supply to N side semiconductor. Okay? And this is what VDC. The DC voltage across the PN junction. So this is the junction. अभी क्या होगा? Let us watch the small animation before explaining. Now, in this animation, देखो क्या होता है. सबसे पहले तो हमने फॉरवर्ड बायस को डिफाइन किया है. प्लस इज कनेक्टेड टू पी साइड, नेगेटिव ऑफ डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू एन साइड. दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस. ओके, सो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स गेट रिपेल्ड and they drift towards the junction, and holes get repelled because of this plus sign. Okay, and they get repelled and they move towards the junction, and junction पे क्या होगा? तो this junction narrows because recombination starts. External voltage की वजह से they are drifting towards the junction and applied voltage exceeds the barrier potential. जब ये जो voltage है VDC, ये जब barrier potential से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? There will be the recombination and the depletion region will completely remove. And just like we can say floodgates are open now and majority carriers surge across the junction and recombination starts. Okay, so what is the situation here? The current is 1 but the carriers are 2. So the takeaway from this discussion is current is 1 but but carriers are 2. Okay, therefore from this process the name is derived. It is the diode. Okay, what this diode stands for? So di means 2, and what this ode, it is taken from electrodes. We have two kinds of electrodes, plus and minus. Okay, so it is electrodes, and we have two kinds of charge carriers here. So holes and electrons. So इसीलिए इसका जो नाम है वो है diode. The current is 1 but the carriers are 2. Okay, the name itself suggests what are the current carriers inside the device. Okay, it's a small component and in itself it is a kind of a device we can say, because it converts bidirectional current to unidirectional current. We'll see in the application. Right now we are studying DC analysis of diode. Diode क्या चीज है, कैसे वर्क करता है, कितना वोल्टेज लगता है, डीसी वोल्टेज देने के बाद कितने वोल्टेज पे करंट फ्लो होता है. सो दिस स्टडी इज कॉल्ड एज अ डीसी एनालिसिस ऑफ डायोड. ओके, सो अगर हमें इसको बेहतर तरीके से समझना है तो इसको हमें इसका जो नेचर है वी कैन अंडरस्टैंड इट ट्रू नेचर फ्रॉम द करंट इक्वेशन ऑफ डायोड. ओके, so let us write the current equation of diode. So diode current is given by, so this equation is called Shockley. This is called Shockley's equation, or we can say ideal diode current equation. Ideal diode current equation. So current through diode is I naught
e raised to v by eta vt minus 1. Okay, where what is I? We have to understand it clearly because we have to solve numericals on this too. So I naught is the current through diode, and it is a function of the voltage, applied voltage, current through diode. And what is I naught? So I naught is the leakage current. We have to understand this concept later in detail. Leakage current. This is also called as the reverse saturation current. It's a very small amount of current. It is in nanoamperes, and this current is in milliamperes. Okay. And what is V? V is the most important parameter here, applied DC voltage, not AC voltage. And this is in volts. We are making everything clear. And what is Vt? So Vt is given by, it is Kt by Q. We can say it is Q by Kt. More appropriate is Q divided by Kt, and this is equal to T divided by 11,600. This is approximately 0.026 volt. Okay, this is approximately 26 millivolt. ये उसका Vt का value है. What is Vt called? So this is called thermal voltage or volt equivalent of temperature. So we'll use the thermal voltage term. Okay. Now let us relate this term. हमने जो explain किया है अभी operation of PN junction diode in forward bias, उसको relate करते हैं using the VI characteristic of PN junction diode. So this is the current through diode. This is in milliampere, and this is the voltage in volts. Now note down this point. ये जो voltage है फॉरवर्ड बायस का, ये स्केल इसका 0, 0.1, 0.2 और 0.3 से स्टार्ट है. रिवर्स बायस का ऐसे नहीं है. इट इज हैविंग हायर रीडिंग्स. ठीक है. नाउ सी इनिशियली व्हेन देयर इज अ बैरियर पोटेंशियल, देखिए वी आर इंक्रीजिंग वोल्टेज अक्रॉस डायोड बट देयर इज नो करंट थ्रू दिस. ओके. सो वी डीसी, ये जो अप्लाई किया है हमने वी डीसी, सो दिस इज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल वी बी आई और वी नॉट. सो व्हाट इज द करंट? So current I is equal to approximately 0, okay, close to 0. And when VDC is greater than VBI or V0, what is the current? So I is increasing, so I has increased, and exponentially it is rising. So this is the on condition of the diode. Okay, and the voltage at DC voltage, ये जो value है DC voltage का, जिस वोल्टेज पे करंट एक्सपोनेंशियली राइज होता है, सडन देयर इज अ इंक्रीज इन करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस डायोड रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ कट इन वोल्टेज. सो व्हाट इज द कट इन वोल्टेज? सो कट इन वोल्टेज को डिनोट किया जाता है वी गामा. इट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज, एंड दिस इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड. एंड जर्मेनियम के लिए कितना है? सो दिस इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम मटेरियल का डायोड अगर हमने बनाया तो उसके लिए हमें कम वोल्टेज लगता है. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि व्हाट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. हम दोनों को कंपेयर किया है, इसीलिए आप ये समझ जाओगे. अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लो जिसमें हमने दोनों को कंपेयर किया है. ठीक है. सो दिस इज द कट इन वोल्टेज, द वोल्टेज एट विच द करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि व्हाई डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस. Why diode is a non-linear device, and it is said that diode is a non-linear device. Now what is a linear relation? Linear relation क्या होता है? We are talking about the voltage and current through diode. Suppose ये voltage है, ये current axis है. So 0, we are increasing the voltage and the current will increase. So this kind of relation is called as a linear relation. लेकिन ये जो ग्राफ है हमारा, is it linear? No, it's exponential. It says that the relation is linear. So we can prove this by taking some values. Let us take I naught.
सो लीकेज करंट जो है वो है 1 नैनो एम्पियर, और VT का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 0.026 वोल्ट, और ईटा जो है आइडियलिटी फैक्टर, इट इज कॉल्ड आइडियलिटी फैक्टर 1 और 2 लिया जाता है, डिपेंड्स अपॉन द जर्मेनियम और सिलिकॉन। लेट अस टेक n इक्वल टू 1। सो अभी क्या होगा, V इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट लिया हमने, सो व्हाट इज द I, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इनटू दिस, इट इज V बाय ईटा VT माइनस 1। अगर V का वैल्यू अगर ग्रेटर है, ओके, सपोज V का वैल्यू ग्रेटर देन, ओके, बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू है V इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा है, e raised to V by eta VT will be greater than 1. So we can write this as I is equal to I naught e raised to V by eta VT simply. और इसका जो वैल्यू है तो ये आएगा अराउंड, अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस विल बी अराउंड 46 नैनो एम्पियर। ये पूरे वैल्यूज को हमने पुट किया, all these values equation में पुट किया, and then we'll get 46 nano ampere current in the forward bias. Let us take, so this is our first case. Let us take V is equal to 0.5, जंप करते हैं हम, और क्या होता है देखेंगे। So V is equal to लिया, तो हमारा जो वैल्यू है, so this will be what is, we have 1 nano ampere current into e raised to 0.5, eta is 1, 0.026. So this is around 225 milliampere current इतना आएगा, and for V is equal to 0.6, तो हमारा जो वैल्यू है 1 nano ampere multiplied by e raised to 0.6 divided by 0.026, so this is around 10.5 ampere, so huge amount of current. See this, so exponentially it is increasing, so it is exponentially I increasing, okay. If you change V, okay, small amount of change in V produces a large amount of change in the current. So this exhibits that diode is a non-linear device. Got it? Now what is dynamic resistance of PN junction diode? The dynamic word indicate that some quantity is going to change. Abhi, what is resistance? Ratio of voltage to the current. Okay. So when AC voltage is applied, अभी AC वोल्टेज हम कब अप्लाई करेंगे, जब वोल्टेज को एप्लीकेशन में यूज किया जाएगा। ओके, सो डायोड कैन बी टर्न ऑन बाय यूजिंग द डीसी वोल्टेज, बट डायोड इज नॉट मेड टू अप्लाई डीसी वोल्टेज। ये कुछ काम करने के लिए बनाया गया है, जैसे कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो at that situation what will happen, if you want to understand this, so we should discuss the dynamic resistance of the diode. Let us take change in the voltage. Suppose हमने एक change ले लिया, suppose this point, so this is the one voltage, और suppose characteristic में this is the other reading, let us say it is 0.1. So this, ये जो change in voltage है, so this change in voltage, the small change in voltage is dV, और जो change in current है, suppose if you consider the same amount of the voltage change and एक लाइंस मार्क किया हमने, सो दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है ये, so this is the change in current, and the ratio of these two things, इसका जो रेशियो है, this is called dynamic resistance. So it is change in voltage to the change in current is called dynamic resistance. So this is our equation 1. और हमारे पास एक इक्वेशन है, and that is Shockley's diode equation. Shockley's diode current equation. And what is that? So it is I is equal to I naught e raised to V divided by eta VT minus 1. V जो है अप्लाइड वोल्टेज है, ईटा 1 और 2 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड, और VT जो है ये है थर्मल वोल्टेज 0.26। सपोज वोल्टेज है और डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो क्या हो सकता है, द पॉसिबिलिटी इज दैट व्हेन V इज ग्रेटर देन 0, मतलब V पॉजिटिव है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली इट विल बी मोर, सो इट इज e रेज टू,
eta Vt जो है it will be higher than 1. So let us neglect 1. The equation will become approximate. So it is I is I naught e raised to V by eta Vt. ये बन गया हमारा. We can rearrange this. We can remove exponential term from this. So let us do it. So it is, so I divided by I naught is equal to e raised to V by eta Vt. Okay, if we take natural log on both sides, so natural log of I divided by I naught is equal to natural log of e raised to V by eta Vt. So what we'll get? So we'll get natural log of I divided by I naught is equal to, okay, let us write again. So natural log of e raised to eta Vt हमने लिखा है. तो ये जो टर्म है, so we have relation natural log of 1 by x ऐसा है सपोज, या फिर e raised to x है. So natural log of e raised to x ऐसा कोई टर्म है तो we'll get only simply x. By using this relation we can write this as natural log of I divided by I naught. So it is v divided by eta Vt directly. So simplifying this we can write this v is equal to eta Vt natural log of I divided by I naught. So we can rewrite this as v is equal to eta Vt natural log of I minus natural log of I naught. ठीक है? So differentiating this, we want some relation for that. Differentiating with respect to I. So what will happen? So it will become dv by di. So it is, these are the constant terms eta Vt, and differentiation of ddi of natural log and ddi of natural log of I naught. Okay, so this is also constant term, so this derivation will be, differentiation will be 0. So what we'll get? So we'll get dvi dv by di is equal to eta Vt into ddi of natural log of I. So by using relation, so ddx of, so natural log of x, so we can write this is equal to 1 by x. So this relation we have. By using this we can simplify this further. So हमें मिलेगा dvi by di is equal to eta Vt divided by I. तो ये हमारा इक्वेशन. So it is dvi by di is nothing but dynamic resistance. हमारा इक्वेशन 1 है. So this is eta Vt divided by I. So from this equation, so we can have conclusion. So dynamic resistance is inversely proportional to current through diode. Okay, जितना ज़्यादा current होगा उतना dynamic resistance कम होगा. So if you know these things better, we can have the better design using the diode. Reverse biased PN junction diode. What is mean by that? From this circuit, we can understand the negative of power supply is connected to P side and positive of DC power supply is connected to N-type semiconductor. This way of application of voltage is called as a reverse bias. As we note that symbol of diode is like this. So this is the symbol, and anode and cathode is shown like that. This arrow shows us something. What it shows? It shows the direction. The possible current direction through this PN junction diode is from anode to cathode only. This diode cannot conduct in the reverse bias. The current is not possible from this diode in the reverse bias. But still, this characteristic in reverse bias, so this portion is the reverse bias characteristic. This is the forward bias characteristic. Okay. So we have studied the forward bias in detail, discussed the cut-in voltage and what is the dynamic resistance and so many parameters. So this is the I versus V, and particularly this I in forward bias is milliampere and this is in volts.
Now things are changed in reverse bias. The current through diode in reverse bias does not flow. If you force to flow the current, if you force diode to carry the current in reverse bias, so it is in microamperes. The current is in microamperes and the voltage is very huge amount of this one. So this is, let us say, 4 volt, 6, 8, 10 or something greater than that. So this is the reverse voltage. Okay, we'll see what is this portion. ये जो यहाँ तक का portion है, ये current, ये जो current है, what is that current? So this current is called as a leakage current, I naught. और इसके बाद का जो current है, वो है breakdown current. So this region is called as a breakdown region. So this region is called as a breakdown region of this one. In reverse bias में breakdown होता है. Okay, if you are forcing this to happen, तभी हो जाएगा breakdown, वरना नहीं होगा. Because diode is made to operate in forward bias, not in reverse bias. Okay, so make these things clear while sketching the VI characteristic of diode in forward bias as well as in reverse bias. Fine. Let us understand this. Let us watch this small animation. What happens in reverse bias as we increase the reverse voltage. Now we can see that in reverse bias as we increase the DC voltage, क्या होता है? The holes, है ना? The holes क्या होते हैं? Attracted due to this negative charge. Holes is having positive charge on it. So they will move away from this junction. यहाँ के जो holes है, they will move away from junction. और यहाँ के जो electrons है, they will also move from this side. They will move towards this positive sign. So electron is having negative charge and there is attraction. And they will drift away. जबरदस्ती उनको खींचा जा रहा है because of this external voltage. तो क्या होगा? This ये जो width है, ये width increase हो जाएगी. Okay, as you see in the this animation video, है ना? Depletion increase हो रहे इसका. So there is no way of carrying the current due to majority current carriers. Okay, remember this word. I am again pronouncing. There is no current because of majority current carriers through diode in reverse bias because they are moving away from the junction and there is no recombination at the junction. Okay, now अभी ये जो करंट बताया गया है कैसे फ्लो हो रहा है ना? सो दिस करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ, ओके, और ये जो करंट है, ये जो करंट है ये कितना करंट है? ठीक है, so we have again take the help of the diode current equation. So it is I naught, so it is e raised to v divided by eta vt minus 1. Okay, suppose what is v here? V is less than 0, means v is negative. One thing is clear. Okay, v is negative. अभी current negative हो सकता है क्या? No, current can't be negative because what is current? So it is transfer of charge with respect to time and it is the function of time. The current can't be negative. The current can be reverse. Okay, so it is the reverse current through diode. The current is never can be negative. So here V is negative. Okay, it is having negative. अब कैसे, what is the effect on this? So ये जो equation है, so this will help us to understand this. E raised to minus V by eta Vt minus 1. अभी क्या होगा? ये जो टर्म है e raised to minus v by eta Vt, it will be less than 0. तो ये जो टर्म है ये लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा? माइनस 1 है. सो दिस I will be I naught into minus 1. So this I will be minus I naught. Okay, in reverse bias ये इसको हम कहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं? सो दिस क्वाड्रेंट में, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे हमने स्केच किया उसको. ओके, वी कैन प्लॉट इट इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये जो करंट है, so this is the leakage current and here, so it is the I naught value है. ठीक है, so it is small amount of current. So I naught is very very small current. Okay, and it is in nano ampere. अभी फ्लो कैसे होता है लीकेज करंट में करंट? सो दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड. अभी होता क्या है कि now it comes the importance of minority carriers
in the diode. We know holes के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है. अभी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके लिए ये जो रिवर्स बायस है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज कैरियर्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉरवर्ड बायस काम करेगा और ये जो होल्स है इनके लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बायस का काम करेगा. तो ये डिप्लीशन रीजन में वो क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे. ओके, दे विल एक्वायर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दे विल पेनिट्रेट द डिप्लीशन रीजन. ठीक है, और कांस्टेंट उनका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है ना, एकदम से ऐसे इंक्रीज नहीं होगा. स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज है, तो अमाउंट ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स penetrating the depletion region is small and it is a constant. Therefore, ये जो current reading है, it is having the constant reading. Okay, so this is just below the voltage axis. ये जो current है, so this is the I naught. Exactly, it's a very small amount of current flowing through this. यहाँ पर है और ये जो current है, so let us say it is 2. Okay, let us say 4. Okay, 8, 12 and 14 microampere. It's a very small amount of current, but this current is very very small, close to zero. है. Now you got it, how it is flowing? It is because of minority current carriers, because this applied voltage acts as a forward bias for them and they penetrate across the junction in the depletion, widened depletion region, and they constitute a small amount of current through diode. Now what is the direction of this current? Plus to minus. So this current is plus. So this is the direction of current through this one. And it is moving from cathode to anode. Cathode to anode में flow हो रहा है. ठीक है, अभी ये I naught is also present in forward bias, but it is along with the main current. Okay, because all the terms are positive there, therefore it is in the forward bias itself. वहां पर भी minority carriers present थे, but उसको हमने consider क्यों नहीं किया, ग्राफ पे क्यों नहीं शो किया, because it is in the flow of majority current carriers. ठीक है, so this is the concept of leakage current and this is a function of temperature. ये जो है it is a function of temperature. ठीक है, so I naught ये जो है doubles, I naught doubles for every 10 degree Celsius rise in temperature. And this is very important as far as diode is concerned. Diode is just like a bipolar device है ना, जिसमें current carriers are two, holes and electrons है ना. तो यही एक चीज है जो डायोड को बर्न करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो. So this relation is very important statement and we'll solve examples on this and we'll see different cases of this. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे कैरेक्टरिस्टिक का, रिवर्स बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, ये जो पोर्शन है, सो दिस इज व्हाट ब्रेकडाउन रीजन एंड दिस रीजन, ये जो होता है रीजन, ये होता है एवलांच ब्रेकडाउन. एवलांच ब्रेकडाउन, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एवलांच ब्रेकडाउन. ठीक है, अब ये जो टर्म है एवलांच ब्रेकडाउन, ये यूज की जाती है जो आइस का स्लाइडिंग होता है हिमालयस माउंटेन्स के अंदर, जब भी है ना हॉट समर सीजन होता है, सो द आइस स्टार्ट मेल्टिंग एंड इट कोलैप्स फ्रॉम द टॉप एंड व्हाइल कमिंग डाउन to the ground level, okay, it strikes with the different icebergs and so many icebergs join it and it starts from one and it ends on the millions. ठीक है, तो ये चीजें क्या करती है, हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज मीन बाय एवलांच ब्रेकडाउन. हमने देखा ये रिवर्स बायस जो है, ये रिवर्स बायस को हमने अप्लाई किया है डीसी वोल्टेज को अक्रॉस पीएन जंक्शन. अभी देखो डिप्लीशन रीजन जो है ये वाइडन हो रहा है, सो ये डिप्लीशन रीजन के अंदर जो है there are no charge carriers except minority charge carriers. इसके अंदर कौन पेनिट्रेट कर रहा है, minority charge carriers. They are accelerating, okay, they are drifting because of this reverse bias voltage across the junction. ठीक है, तो ये हो रहा है एंड दे आर कांस्टेंट. बट अगर हमने ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज किया तो क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज किया, सपोज हमने 80 वोल्ट ले लिया, सपोज
सपोज हमने बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो ये हमारा यहाँ तक जो है ठीक है, इट्स अ लीकेज करंट। ओके, सो दिस अमाउंट ऑफ करंट इज अ लीकेज करंट। लेकिन यहाँ के बाद जो है क्या होगा, एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज, ओके, द प्रोसेस विल स्टार्ट, एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस विल स्टार्ट इन द डिप्लीशन रीजन। ओके, अब ये एवलांच ब्रेकडाउन होता कहाँ पर है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट ऑकर्स इन लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट व्हेन, जब हम जीनर डायोड स्टडी करेंगे वहां पर ये पॉइंट को आपको याद करना है, बिकॉज इट इज हेवीली डोप्ड जंक्शन। ठीक है, सो लाइटली डोप्ड जंक्शन में होता है व्हेन अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज एक्सीड्स ए क्रिटिकल वैल्यू, जैसे हमने लिया है 80 वोल्ट, है ना। अंडर स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन बिकम्स वेरी हाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। ओके, और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इट एक्सेलरेट्स थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो थर्मली जनरेटेड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। ठीक है, बोथ दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, these accelerated carriers gain enough kinetic energy and collide with the valence electrons of the neutral atoms। ये रीजन के अंदर जो एटॉमिक बॉन्ड्स है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको, जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो इसको कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, दिस प्रोसेस जनरेट न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और होल इलेक्ट्रॉन्स न्यू रिलीज हो जाएंगे उसमें से। एंड दिस न्यूली जनरेटेड कैरियर्स क्या करेंगे, वो भी एक्सेलरेट करेंगे, वो भी दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड्स को स्ट्राइक करेंगे। एंड ये कोलिजन जो है इट बिकम्स अ क्यूमुलेटिव कोलिजन, दिस इज द क्यूमुलेटिव प्रोसेस। एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस से क्या होगा, कैरियर मल्टीप्लिकेशन वहां पर हो जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक कर देंगे। एंड दिस काइंड ऑफ ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन, है ना। एक से स्टार्ट हुआ था, कुछ कुछ फ्यू माइनॉरिटी कैरियर से स्टार्ट हुआ था शुरू में, जो कि कांस्टेंट था। उसके बाद वो प्रोसेस क्यूमुलेटिव बन गया और पूरा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स थे उसमें सब ब्रेक हो गए एंड द करंट इज कैरिड थ्रू दिस वन। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो दिस इज कैथोड टू एनोड करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, actually diode is not made to operate in this region, therefore the word used is breakdown word, है ना। and this process is the avalanche breakdown in PN junction diode। ठीक है, and this process को, ये जो voltage है इसका, so this voltage is called as a breakdown। अभी यहाँ से करंट कैसे इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा। as we increase VR reverse voltage तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इट्स नॉट शार्प, इस वोल्टेज ऐसे करंट ऐसे इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, द करंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन विद द रिवर्स वोल्टेज, जैसे हमने इंक्रीज किया वैसे करंट बढ़ जाएगा। ओके, एट वन पॉइंट द डायोड विल बर्न and the process starts because of minority current carriers। Okay, so this is the concept of reverse leakage current, reverse bias and avalanche breakdown।